Hello everyone, this is your Mr. Sir. Welcome to my channel Mr. Sir Classes. In this sessions, I am going to discuss another very important topic, that is stoichiometry of chemical reaction. Means chemical reaction की stoichiometry को understand करना है. So first of all, I want to tell you, my dear friends, now one of the most important aspects of chemical equations, that when it written in a balanced form. So basically this video will gives you clear idea about relations between mole, mass, molecules and volume, even stoichiometric coefficient. Now there is so much important. What about stoichiometric coefficient? बेसिकली किसी केमिकल इक्वेशंस के पहले जो भी नंबर होती है, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, बेसिकली उसको हम लोग स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट इंट्रोड्यूस करते हैं. And please concentrate and watch end of the video. I am sure you will be just perfect and you can solve maximum question based upon stoichiometric coefficient. Now let's start the topic stoichiometry of chemical reaction in a general approaches. So as we know, now there is very important things. Now basically ये क्या बोलता है, that means it gives quantitative relationship between various reactant and product in the term of moles, mass, molecules, even volume. दैट मीन्स इनके बीच में जो इंटरलिंकिंग होता है या किसी केमिकल इक्वेशंस को कैसे राइट किया जाता है, कैसे रीड किया जाता है, तो बेसिकली उसको अंडरस्टैंड करना है, उनको लिंक करना है. सो इसी को स्टाइक्योमेट्रिक, दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड स्टाइक्योमेट्री. दैट्स अ ग्रीक मीनिंग मेजरमेंट and elements. So how to measure, how to calculate on the elements due to chemical reactions. Now this is so much important. The coefficient of the balanced chemical equations are called stoichiometric coefficient. For examples, अगर किसी केमिकल रिएक्शंस को राइट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टाइक्योमेट्री, तो बेसिकली इसमें केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस फॉर्म में राइट किया जाता है. एंड हाउ टू balancing chemical equations, I already taught you our previous video. So in this video just we will discuss over here stoichiometry. सो अगर एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ HCl, सो व्हाट विल वी गेट, दैट इज कैल्शियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो इसको हम लोग कैसे रीड आउट करें, कैसे एक दूसरे से लिंक करें, दैट मीन्स हाउ मेनी मोल कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ हाउ मेनी मोल्स ऑफ HCl एंड हाउ मेनी मोल्स प्रोड्यूस कैल्शियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. सो लास्टली आई ऑलरेडी टॉट यू व्हाट अबाउट मोल्स. सो अगर देखिए, नाउ हेयर इट इज ऑलरेडी गिवन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशंस. So 1 mole of calcium carbonate react with how many moles, that is 2 mole of hydrochloric acid. So what we get, that is 1 mole of calcium chloride, 1 mole water and 1 more carbon dioxide. So as we know, जैसे यहाँ पे हमको क्या पता चला कि कितने मोल सब्सटेंसेस कितने मोल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है. अगर मैंने 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट लिया है और इसका रिएक्शन 2 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अगर कराया गया है, तो कितने मोल कैल्शियम क्लोराइड या भी जो प्रोडक्ट मोल मिला, ये भी 1 मोल, वाटर भी 1 मोल और कार्बन डाइऑक्साइड भी 1 मोल मिला. सो देयर इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट. नाउ यहाँ पे हम लोग मोल का क्या कर रहे हैं, रिलेशंस फाइंड करें. दैट मीन्स 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का 2 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जब रिएक्ट कराया गया, तो 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड, 1 मोल वाटर एंड 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड अपन को ऑब्टेन हुआ. नाउ सिमिलरली अगर मेरे को यहाँ मास के फॉर्म में, बिकॉज बेसिकली इट इज रिलेशन बिटवीन मास, मॉलिक्यूल्स, मोल्स. सो मोल्स तो समझ में आ गया. अब मास. So how to the calculate of the mass? Now you can say calcium's atomic mass being 40, carbon 12 and oxygen 16 into 3. Why we are taking 3? Because oxygen how many times, that is 3 times. So finally अगर इसको simplify करें तो कितना आ जाएगा, 100 ग्राम. Now HCl ये 2 molecules है, तो H1 plus 35.5 क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है. बेसिकली अगर इसको 2 मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल ले लिए तो कितना हो गया, 73.
सिमिलरली अगर कैल्शियम कार्बोनेट का फाइंड करें तो 101, वाटर का कितना हो जाएगा 18 एंड कार्बन डाइऑक्साइड का कितना हो जाएगा 44 ग्राम। अब इसको हम लोग कैसे रीड आउट कर सकते हैं? नाउ दिस इज सो मच इम्पॉर्टेंट। ओके, आई ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड रिएक्ट विथ 2 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड what we get, that is 1 mole calcium chloride, 1 mole water, 1 mole carbon dioxide. Now similarly, how to introduce, how to read? Now you can see, first 100 gram calcium carbonate react with 73 gram of HCl. So how many molecular mass obtain calcium chloride, that is 111 gram, water 18 gram and carbon dioxide having 44 gram. मतलब अगर 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का अगर 73 ग्राम HCl से अगर रिएक्ट कराया जाता है तो कैल्शियम क्लोराइड कितना मिलता है 101 ग्राम, वाटर कितना मिलेगा 18 ग्राम और कार्बन डाइऑक्साइड कितना मिलेगा 44 ग्राम. So once again I repeat what happened is there. Now basically in this segment what we have to do, that is the relations between mole, mass, volume, stoichiometric. Now you can see, now there is a stoichiometric because this is a balanced chemical reaction. So first of all I am writing here balanced chemical reactions, which is represent stoichiometric coefficient. After that we have to do relations mole. ओके, मोल के रिस्पेक्ट में मैंने इसको रीड किया. आफ्टर दैट मास के रिस्पेक्ट में मैंने इसको रीड किया. दैट मीन्स 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ 73 gram of HCl. So what we get, that is 111 gram of calcium chloride and 18 gram water and 44 gram of carbon dioxide. Now thus what we conclude in this video. Now you can see, first 1 mole of calcium, that means how to read in this chemical equation. Now this is so much important because on the basis of class 11, now this is so much important. Now see, 1 mole of calcium carbonate react with 2 mole of hydrochloric acid to give 1 mole of calcium chloride, 1 mole of water and 1 mole of carbon dioxide. I already told you what happened is there. Now one more thing is that, now see, now how to categorize on the stoichiometric. Now type of quantitative informations, that means how many types we calculate the quantitative information. First mass relationship, mass volume relationship and volume relationship. Now this is so much important. Now what is the sense of mass relationship, mass volume relationship? Now you can see here. Now just mass of one of the reactant or product is given and the mass of the some other reactant or product to be calculated. मतलब अगर मास है तो ये मास के फॉर्म में ही हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे अगर मैं रिएक्टेंट साइड को मास में लिया है तो डेफिनेटली प्रोडक्ट साइड भी क्या हो जाएगा, मास में ही होगा. सिमिलरली मास वॉल्यूम, बहुत से केमिकल रिएक्शंस होते हैं. नाउ सी हियर, one of the reactant or product is given and volume versus mass of the other of the calculated. Now this is so much important. Now first of all, how to calculate now this type of examples. Now general method for the calculations: first write down the balanced chemical equations. Second, write the relative number of moles and apply the unitary method of the make required calculations. Now this is so much important. Now one more thing is that here you can note here, in case gaseous substance, in case we have to take a gaseous substance, now mole replaced by 22.4 liter of STP. बिकॉज जब कोई भी सब्सटेंस गैसियस फॉर्म में लेते हैं तो मोल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, 22.4 लीटर के फॉर्म में. मतलब अगर किसी केमिकल इक्वेशंस को अगर रिप्रेजेंट करना है तो उसको कैसे करें, हाउ टू द कैलकुलेशंस मेथड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल what we have to do, that is write down the balanced chemical equations. After that write the relative moles and apply the unitary method to make required calculations. Okay, if I take examples according to the book. Now you can see, calculate the amount of water
amount of water produced by the combustions of 16 gram of methane. Now this is so much important. Now what about that? Calculations the amount of water. Now you can see here, कैलकुलेट क्या करना है, वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर कैलकुलेट करना है प्रोड्यूस्ड बाय द कंबसेशंस ऑफ 16 ग्राम ऑफ मेथेन. अब मेथेन को अगर कंबसेशन कराया जाए, अगर बर्न कराया जाए, तो वाटर जो फॉर्म होगा वो कितना होगा, बेसिकली ये समझना. नाउ सी सॉल्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, दैट इज अकॉर्डिंग टू दिस रूल, राइट डाउन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन. So carbon dioxide methane plus oxygen convert into carbon dioxide plus H2O. So first as we know, when methane react with oxygen, so what will be produced? Carbon dioxide plus water. After that we have to write a balanced chemical equations. Okay, now you can see 1 mole methane react with 2 mole of oxygen, so what we get, that is 1 mole of carbon dioxide and 2 mole of water. On the basis of mass, that is 16 gram of methane react with 32 gram of oxygens, and how many grams produced carbon dioxide, 44, and water is 36. सो बेसिकली जो क्वेश्चन पूछा है वाटर, इसलिए वाटर के रेस्पेक्ट में यहाँ राइट किया हो. ना यू कैन सी 1 मोल ऑफ मीथेन ऑन द कंबसेशंस ऑफ 2 मोल्स ऑफ वाटर. 2 मोल्स ऑफ वाटर, दैट मीन्स 1 मोल मीथेन के कंबसेशन से कितने मोल वाटर प्रोड्यूस हुआ, 2. Now there is so much important, but 1 mole of methane which is equals to 16 gram, 1 mole of water which is equals to 18 gram, and 2 mole of water which is equals to 36 gram. So finally what we conclude, that is 16 gram of methane on complete combustibles produced 36 gram of water. Now this is so much important, amount of the water in gram. अगर ग्राम में पूछ रहा है तो 16 ग्राम मेथेन को बर्न करने पे, दैट मीन्स मीथेन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, अगर इसके साथ मैंने रिएक्ट कराया तो कितना ग्राम वाटर प्रोड्यूस हुआ, दैट इज 36 ग्राम. सो दिस इज सो मच इम्पॉर्टेंट. नाउ आई हैव some questions. Now you can see examples. How many moles of methane are required to produce 22 gram of carbon dioxide after combustions? Now same questions, how many moles of methane are required to produce 22 gram of carbon dioxide after combustions? Now this is so much important. If you know the chemical reactions, now what happened is that, now see how many moles. Now what about moles? That is given mass upon molar mass. Now 22 gram of carbon dioxide. How many moles of methane are required to produce 22 gram of carbon dioxide? Okay, now moles n which is equals to 22 upon how many gram mass in carbon dioxide, that is 44. So after that what we get, that is answer. So I hope you understood. Now see, calculate the mass of iron which will be converted into oxide Fe3O4 by the actions of 18 gram of steam on it. Now this is so much important. Now you can see here, now after calculation, now according to second calculation, the mass of iron which will be converted into oxide Fe3O4 by the actions of 18 gram of steam on it. Now what about steam? That is water. Okay, as we know first iron react with water, so what we get, that is Fe3O4
plus 4H2. So I hope you understood. That means if that balance on the chemical reaction, that means 3 Fe, because here it is 3, and this is 4H2O. So this is balanced. Okay, as we know, 3 into how much is the atomic mass, that is 56. Yes, I know that, so I am writing here. And 4 into 18, so 4, and water how much, that is 18. And finally what we get, that is Fe3O4, no, which is not required, so we are not mentioned here. You can see 56 into 3 how much, that is 168 gram, and 18 4 ja 36, that means 72 gram. And finally what we get, now this is very simple. Now therefore 18 gram, therefore 18 gram of steam react with what, that is 160 gram of iron react with 72 into how much, that is 18, because we are taking to 18. So finally what we get, now after simplify these chemical equations, how much, that is 42 gram of iron. So you can see the calculate the mass of iron which will be converted into oxide by the actions of 18 gram of steam ओवन इट. दैट मीन्स अगर इस 18 ग्राम वाटर का रिएक्शन अगर इससे कराया गया तो फाइनली ये ऑब्टेन हुआ. बट जो पूछ रहे वो क्या है आपका कि 18 ग्राम ये करने पर आयरन का कितना ग्राम मिला, दैट इज 42 ग्राम. दैट मीन्स मास ऑफ आयरन इज 42 ग्राम. ओके, one more example is here. Now this is so much important. What mass of slaked lime would be required to decompose completely 4 gram of ammonium chloride, and what would be the mass of each product? Now this is so much important. Once again I repeat, the mass of slaked lime. Now what about slaked lime? That means calcium hydroxide, which is known as slaked lime, would be required to decompose completely 4 gram of ammonium chloride, and what would be the mass of each product? So I already calculate, that means wrote here. So I want to tell you, now you can see. Now look at here, solution slaked lime, which is calcium hydroxide. So calcium hydroxide react with 2 mole of 1 mole calcium hydroxide react with 2 mole of ammonium chloride. So what will we get? That is 1 mole of calcium chloride, 2 mole of ammonium, and 2 mole of water. So first of all, मोल के केसेस में क्या होता है कि 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दो मोल सोडियम अमोनियम क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन होता है तो 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड, 2 मोल अमोनिया एंड 2 मोल वाटर का प्रोडक्शन होता है. नाउ सिमिलरली अगर मास के केसेस में लिया जाए तो 74 ग्राम calcium hydroxide react with 107 gram of ammonium chloride, and how much get calcium chloride, that is 111, and 34 gram of ammonia and 60 gram of वाटर का क्या होता है प्रोडक्शंस होता है. अब इसमें क्या पूछा है, ईच एलिमेंट्स. नाउ कैलकुलेट द मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू 4 ग्राम ऑफ NH4Cl. Now you can see 4 gram of NaCl will be decomposed by calcium hydroxide 74 by 107. Why we are taking? Because here it is asking on the ammonium chloride. So ammonium chloride का जो भी substance है 107, how many gram? That is 4. किसके रेस्पेक्ट में? अमोनियम क्लोराइड के रेस्पेक्ट में. सो व्हाट वी गेट, दैट इज 174 upon 107 into 4. Why we are taking?
Why we are taking 74? Because it is react with calcium hydroxide, react with 2 moles of ammonium chloride, so it is here. Now next one is this is test yourself questions. Calculate the mass of calcium chloride formed, calculate the mass of ammonia produced, and calculate the mass of water is formed. एक चीज़ बेसिक होगा क्योंकि अमोनियम क्लोराइड यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट है, सो सभी के डिनोमिनेटर में 107 होगा. अब आई होप यू अंडरस्टूड. So once again I repeat, now these 3 questions will be test yourself questions. This is so much important. So I hope you understood, and you should be done because it is so much quite easy. If that like in this video, please thumbs up and share it. Thank you for watching this video.